Welcome back, people. In this particular class we'll be learning out what is the history of javascript. History of the javascript. I'm pretty much sure that many of you will not aware about the history of the javascript. See why javascript has developed. For you guys, if you don't know, then javascript was developed by Netscape company. The primary goal was key. See, in the 1990s all people were talking about how to be famous in the tech world, or we can say www boom tha, right? Bubble tha. At that particular time everyone was trying to move online, but there was a problem. At that time every website was static. Now what do I mean by static website? Static website means that suppose मान लो कि I am opening a page. Let's say for an example, let's say if I'm going here and if I open out Flipkart, fine. Now Flipkart पे क्या होगा कि ये मेरा पेज है, राइट? अभी आप क्या कर रहे हो? You are entering your mobile number, you are entering your credentials, and then you are clicking on login. It is behaving as per your comfort. Fine. ऐसा नहीं होगा कि सबको एक ही कंटेंट दिखेगा, राइट? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ आई लॉगिंग आउट एंड इफ आई गो इन माय कार्ट, तो जो भी मैंने कार्ट में ऐड किया होगा वही मुझे दिखेगा. आपका कार्ट और मेरा कार्ट अलग हो सकता है, सबका कार्ट सेम नहीं हो सकता. फाइन. तो ये यूज़र बाय यूज़र उसका बिहेवियर अलग होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, करेक्ट? फाइन. द सेम केस गोज फॉर दिस. दैट स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लो कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन अभी जो रीड कर रहे हो वो सबके लिए एक ही होने वाला है. ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ और न्यूज़ दिखाएगा, किसी और को कुछ और न्यूज़ दिखाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया में. ऐसा नहीं केस होगा. सो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक. फाइन. सो 1990s में जो भी वेबसाइट थी वो स्टैटिक थी. दे वांटेड इट टू बी अ डायनेमिक. तो नेटस्केप ने क्या किया? सी स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि ये HTML और CSS से ही इंटरेक्ट करेगा. HTML मतलब कि आप जो देख रहे हो अभी वेबसाइट पे उसको बोलते हैं HTML, और जो ब्यूटीफाई करने के लिए आप यूज़ करोगे वो होगा CSS. लेट्स से ये पेन का कलर रेड है, ये पेन का कलर ब्लैक है, तो ये CSS से होगा. फाइन. ओके. सो HTML एंड CSS वो सभी यूज़ कर रहे थे हम लोग फॉर ब्यूटीफाई पर्पस. It was, they were not so intelligent कि आपको आपके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट का बिहेवियर डिसाइड करें. जस्ट लाइक फॉर ए केस ऑफ फ्लिपकार्ट, है ना? इट वॉज नॉट द केस इन दैट टाइम. सो वॉट नेटस्केप डिड? नेटस्केप टोल्ड हिज डेवलपर, right? I forgot his name, like it's Brendan. हाँ, Brendan was his name. So Brendan को बोला गया और उसकी टीम को कि आप ऐसा कुछ लैंग्वेज बनाओ कि जो ये दोनों के साथ वर्क कर सके. अभी तक हमारे पास 2 लेयर थे, एक और लेयर बनाओ जो ब्राउज़र में ही जावास्क्रिप्ट करके एक अलग से एक लैंग्वेज बनाओ कि जो HTML एंड CSS के साथ इंटरेक्ट कर सके और इंटेलिजेंस भी हम लोग ऐड कर सके ब्यूटीफाई के साथ. दिस वॉज अ प्राइमरी गोल ऑफ देम. फाइन. उसके बाद ब्रेंडन ने तो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्रिएट कर दी. ओके. ब्रेंडन ने ये क्रिएट कर दी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ, और ये इतना फेमस हुआ कि अप टू 2008 और 2005 तक ये इतना बूम में रहा कि हर एक वेबसाइट अभी तक, मैं बोलूँगा अभी तक, वी आर जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सी फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस ऑफ क्रेड में क्या होगा कि करंटली आई एम होल्डिंग 10+ क्रेडिट कार्ड्स. ओके. तो ये 10+ क्रेडिट कार्ड से व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग शॉपिंग. सो आई हैव टू पे ईच एंड एवरी मंथ द बिल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू बिफोर, मैं पहले क्या करता था कि हर एक वेबसाइट पे इंडिविजुअली मैं विजिट करता था. वहाँ पे मेरा जो भी कार्ड नंबर है वो सब मैं वहाँ पे डालता था. उसके बाद मेरा पेमेंट डन होता था. फाइन. उसके बाद मेरा पेमेंट डन होता था. तो आई हैव टू विजिट
in this particular sites in order to pay my bills. But now with the help of CRED, I can just install one application, it can do my job. Previously I had to install 10 applications of different kind of banks, but now I can just install one app, which is my CRED. From this particular app I can do whatever I want, yes or no. Plus it can also do reward to me. Fine, it will also provide me the rewards. For an example, if we'll say any banks, let's say ICICI Bank, SBI Bank, HDFC Bank. Now every banking sector has moved on what online, whether it's PSU like this SBI, whether it's private sector bank, all are moving online. You can open FD online, you can close FDs online. Even I can say that some neo banks are in picture now. Let's say for an example, Paytm Bank or 811 account of Kotak. They all are virtual banks. There is no branches now. So can you see the power of it? Can you see the imagine the power of this? Okay, now let's say for an example, people were used to go office till the 2019 physically. By the end of the 2019, coronavirus has hit the world terribly. So now everyone was strictly moved at home, but IT people can work online also. At that particular point of time, people को पता चला कि ओके IT में ऐसा भी एक सेक्टर है, ऐसा भी एक एरिया है IT सेक्टर में कि उसमें वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है. यू नीड नॉट टू गो ऑफिस एवरी डे. Fine. See, every day we were traveling for 3 hours, 3 long hours. We say that life is short, save time, do not waste time, but दिन के 3 घंटे हम लोग सिर्फ ट्रैवलिंग में वेस्ट कर रहे थे. कैन यू इमेजिन दिस? एंड नाउ दिस 3 hours are saved along with the fuel. This is very 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 important, and this very good thing that corona has provided to us. Before that, this work from home culture was a taboo, that he or she did not want to work. That is why he is asking or she is asking to do work from home. People were blaming them, but now situation has completely changed, and everyone in my company, at least in many companies, I have very few colleagues of my, in Microsoft, Amazon, PayPal, in every companies, Kindle, every companies, they are working from home only. Fine, okay. Okay, so we were at this particular point of HTML, CSS and JavaScript. So they have developed a JavaScript language to interact with the HTML and CSS. Fine, so now along with my Beautify, I also have my brain. We can say beauty with brain now. Fine, so this has changed the world terribly. Now the question comes that Netscape has again thought, and yeah, one more thing. The moment that Netscape has developed its language, initially the name of the language was ECMAScript. स्टार्टिंग में उसका नाम रखा गया ECMAScript. बट सी ECMAScript इतना फेमस नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि वो टाइम पे जावा बहुत ही फेमस था, तो उन लोगों ने क्या किया, ECMA को निकाल के जावा को डाल दिया. उसके लिए उसका नाम पड़ा जावास्क्रिप्ट. तब जाके वो फेमस हुआ. That is the thing, and this is practical also. See, in my college we were having a competition of Nodila. Nodila was a famous coding competition in our college, in our area, right? Now the college that were beside to us, which was not famous, and they have recently started their own coding context, but it was not so famous. So what they did, they take a poster and they stick that their poster below us. So now everyone who is reading out our poster, this poster will also looked upon, and indirectly or directly their publicity was also happened. Same case was there in JavaScript. जावा बहुत ही बूम पे था, ECMAScript का कुछ नामो निशान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि जावा को ऐड करवा दिया यहाँ पे, तो उसका नाम हो गया जावास्क्रिप्ट. तो पीपल को लगने लगा कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर रिलेटेड, सो जावा भी फेमस है तो जावा का ये कुछ न्यू वर्जन होगा या फिर ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं था, है ना. एंड देन आफ्टर दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड एज ECMA, राइट.
I forgot its full form. European, like you can comment down in the comment section also. It's something started as like European Commission ऐसा कुछ है. Let me see. ठीक है. So we'll see ECMA full form. See, ECMA International, like formal it was what, European Computer Manufacture Association. Okay, that is the name of this. Now I will say that if you want to understand anything related to JavaScript, just this will be your go to the site. This will be your go to site. The what, developer.mozilla.org MDN site. You can learn every topics, almost every topics from this particular site of related to JavaScript. Cool. Okay. Now see, you can also see here that on the web it is famous for being organization which maintain the ECMA or ECMA script, which is code specification for JavaScript language. So ECMA is a contribution factor, or ECMA is a standardized format. ECMA is a standards, or it's an organization which will decide the standards of JavaScript. Fine. Okay. So this is the case. Now when we talk about JavaScript, then in each and every language we have certain variables and certain data types also. So for variables and constant, I have already created a video, separate video for that. You can go through that. Fine. Now we can talk about data type now. So data type में क्या होगा? That will be discussed on the next session. ठीक है. So data type से हम लोग start करेंगे next session में, and then we'll continue further that what and all 10 things we need to learn in JavaScript. Fine. Data type के बाद हम लोग पढ़ेंगे functions, and this will take a long time. Fine. And I'm pretty much sure that if you follow along the videos, if you do the work regularly, this is a very precious content that I'm putting on the YouTube for free. Okay, so take leverage of that. Please like my video. If you want me to create more such videos like this, please subscribe to the channel and share with your fellow mates. Fine. All right. On that note, goodbye, and we'll see on the next video.